So very good evening to all of you. In today's class we are going to discuss your 2016 previous year questions on your environment and ecology. So आमे 2015-2011 क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कसन अपन कर सारे तो आज आम 2016 पेपर आम डिस्कसन अपन करवा. सो किसी पिला जॉइन हो जाते देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कसन. प्लीज वेट फॉर कपल ऑफ मिनिट्स. सो आपण मैंने वीडियो को भी शेयर कर दिंतु पिला किसी जॉइन हो जाते देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन. ओके सो पिला जॉइन होचंदे. इन द मीन टाइम लेट्स हैव ए क्विक डिस्कशन ऑन योर with regarding your Unacademy. So Unacademy विषय में आपन किसी कहि रखे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल होचे Unacademy होचे आपन इंडिया रो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. एथरे ओडिसा रो टॉप एजुकेटर्स माने लाइव क्लास आपन नियंती. सो मोर देन 30 प्लस आवर्स, मोर देन 50 आवर्स आपन करो. सो लाइव क्लास आपन चले दिन को प्लस आपन करो एथरे वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन मध्ये आपन रहउची, मॉक टेस्ट आपन रहउची, फाउंडेशन बैच, रिवीजन बैच मध्ये आपन रहउची. ये सब रो एक्सेस आपन करो पाई परिबे जदि आपण मैंने अनएकाडेमी जॉइन कर. अनएकाडेमी आपको गोटे सब्सक्रिप्शन आप नवा पड़े. गोटे सब्सक्रिप्शन में आप टोटाल ओडिशार जेकोसी एग्जाम प्रिपरेशन आप करेंगे. सो दिस आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनएकाडेमी हु आर टेकिंग योर क्लासेस ऑन डेली बेसिस. से हेल्प नहीं आप निज निजर एग्जाम प्रिपरेशन आप करेंगे. सो मोर बहुत सारा कोर्स आप ओएस एएसओ रही. सो ताप 1 ईयर कि 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आप नहीं पारे. 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप मंथली फीस हो 500 रुपीज. 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ने मंथली फीस होची आपन 300 रुपीस. सो ईएमआई ऑप्शंस आपन अवेलेबल अछि. सो आपन माने सो अनएकाडेमी आपन जॉइन करिकि आपन प्रिपरेशन स्टार्ट कर परिबे. वंस आपन अनएकाडेमी सब्सक्रिप्शन आपन नउचंदी एथरे आपन इंडिविजुअल कोर्स एवं बैच कोर्स रो एक्सेस आपन मिलिबो. तो आपन इच्छा जेकोसी आपन बैच को आपन जॉइन आपन करि परिबे. जेमिति कि हमर एएसओ सेक्रेटरीट पई सामर्थ्य बैच आपन अछि, जेमिति कि आरआई अमीन पई दीक्षांत बैच हमर अछि, जेमिति कि ओसीएस प्रीलिम्स मेंस पई आपन समीक्षा बैच हमर अछि, जेमिति आपन माने ऑप्शनल पई आपन अवलोकन बैच आपन अछि जोथि कि हमर होम साइंस ऑप्शनल एवं आपन ज्योग्राफी ऑप्शनल आपन रहउछि. देन होछि आपन एएसओ हाई कोर्ट पई प्रगति बैच आपन रहउछि. तो एमते आपन बहुत सारा बैच अछि. आपन जेकोसी बैच को आपन जॉइन कर परिबे एवं निजर प्रिपरेशन आपन स्टार्ट कर परिबे विथ योर अनएकाडेमी. सो अनएकाडेमी रे आपन टोटल ओसीएस, एएसओ, सीटीबीडी, सीपीएससी, ओएमसी, आरआई अमीन सब एग्जाम प्रिपरेशन आपन करि परिबे. ओसीएस रे 400 पोस्ट, एएसओ आपन पाखापाखि 400 पोस्ट, सेक्रेटरी हाईकोर्ट मिसेकी आरआई अमीन रे 1200 प्लस पोस्ट आपन रही. सो बहुत भलो ह्यूज वैकेंसी आपन रही. सो डोंट मिस दिस चांस. सो अनएकाडेमी आपन जॉइन कर प्रिपरेशन आपन स्टार्ट कर परिबे. सो व्हाइल जॉइनिंग योर अनएकाडेमी यू कैन अप्लाई माय रेफरल कोड दैट्स योर पुरुषोत्तम लाइव. ओके सो मो प्रोमो कोड होचे आपन दैट्स योर पुरुषोत्तम लाइव PURUSOTTM LIV. सो दिस इज माय प्रोमो कोड. सो आपन आसिक अनएकाडेमी आपन जॉइन करके निजर प्रिपरेशन आपन स्टार्ट कर परिबे. एबे आसंत आम डिस्कसन अपन करबा. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो समस्त को शुभ संध्या. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो फर्स्ट क्वेश्चन अपन आगे व्हाट इज योर कार्बन क्रेडिट. जो मैंने भी अपन लाइव असन टिके रेस्पॉन्स अपन दे दियंतो, वीडियो को टिके लाइक कर दियंतो. आज रो क्लास रे हम 2016 पेपर में एनालिसिस अपन करबा. हम ऑलरेडी 2011 2015 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कशन करि सलेनी. आज हम 2016 पेपर में एनालिसिस करबा. सो व्हाट इज कार्बन क्रेडिट. कार्बन क्रेडिट अपन कोन करेक्ट आंसर अपन दियंतो. वेरी गुड इवनिंग सुचित्रा. जो मैंने लाइव अच्छे टिके रेस्पॉन्स अपन दियंतो एवं आंसर करिया को टिके ट्राई करंतो. ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू आंसर. So what is your carbon credit? It is the difference between the carbon emission allowed and the actual emitted carbon, right? So it is, yeah, explore easy Suchitra and all.
सो करेक्ट आंसर आपन रहउची ए इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एमिशन अलाउड सो एक्चुअली कोन हुए ना सब आपन यूनिट्स के सब आपन कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सो तांको गोटे आपन कार्बन एमिशन गोटे आपन अलाउ करा जाय भाबी नंतु गोटे इंडस्ट्रीज को आपन 100 यूनिट्स आपन कार्बन एमिशन अलाउ करा गला राइट देन आपन से एक्चुअल एमिट आपन केते गला ना आइदर 75 यूनिट्स आपन करिवो एल्स आपन 125 यूनिट्स आपन करिवो ता माने आइदर आपन डेफिसिट आपन करिवो नले आपन लिमिट के अपन क्रॉस अपन करिवो तो एठी अपन कोन होबो ना अपन कार्बन मार्केट एक्चुअली कांसेप्ट अपन आसिला सो कार्बन मार्केट कांसेप्ट अपन आसिला जोथि कि कार्बन अपन कोन होबो ना अपन कार्बन क्रेडिट अपन ए कांसेप्ट अपन आसे जोथि कि कार्बन ट्रेडिंग अपन हुए सो किना बिका अपन हबो माने भाबी नंतु ये जदी इंडस्ट्री ताको अपन 100 यूनिट्स रा परमिसिबल लिमिट थिला ता माने जदी ये 75 यूनिट्स अपन कार्बन एमिशन अपन कला ता माने 25 यूनिट्स या पाखरे कोन रहला ना अपन सरप्लस रहला जहाँ को सी अपन कार्बन मार्केट रे 25 यूनिट्स को अपन बिकिबा को ट्राई करिवो तो भाबी नंतु जदी कोनोसी इंडस्ट्रीज 125 यूनिट्स अपन प्रोड्यूस अपन करिछि कार्बन एमिशन अपन करिछि बट जहार एमिशन लिमिट अपन रहितला 100 यूनिट्स ता माने ये कोन कला ना 25 यूनिट्स अपन ये एक्सीड अपन करि गेला तो ये 25 यूनिट्स ये कंपनी रे अपन किनिबा को चेष्टा करिवो इज दिस थिंग क्लियर बुझि पले सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन क्रेडिट जहाँ को अपन कार्बन ऑफसेट अपन कहंती तो बेसिकली दिस इज एन ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और योर परमिट यू कैन से सो 1 कार्बन क्रेडिट इज बेसिकली इक्वल टू 1 टन ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड ता माने 100 कार्बन क्रेडिट्स माने 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम अपन को कहिबा राइट वेरी गुड इवनिंग शुभश्री ग्रुप रे 2011 लिंक खोलुची 2011 लिंक खोलुची ग्रुप रे जस्ट अ सेकेंड आई एम सो सॉरी ग्रुप रे ओके फाइन आई एम सो सॉरी ओके आई एम सो सॉरी सो 2011 लिंक अपन पड़ी थिला से पे मु भाबुतले जे कोन पे के पिला आसुनथि ओके फाइन आई एम सो सॉरी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल शुभश्री थैंक यू फाइन कार्बन क्रेडिट समस्या बुझी पाले था फर्स्ट क्वेश्चन अपन रहितला सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन ऑफसेट्स बेसिकली दिस इज एन परमिट और योर ट्रेडेबल सर्टिफिकेट दैट यू कैन से जोथि कि कार्बन ट्रेडिंग अपन हे परिबो तो 1 कार्बन क्रेडिट होछ अपन 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो कार्बन क्रेडिट्स आर पार्ट ऑफ अटेम्प्ट्स टू मिटिगेट द ग्रोथ इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस सो ग्रीन हाउस गैस को एक्चुअली अपन गोटे रेस्ट्रिक्ट अपन करिया पे ये कार्बन क्रेडिट कांसेप्ट अपन आसे सो कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन ऑफसेट्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू योर अफोरेस्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन मीथेन कैप्चर बाइंग फ्रॉम एन एक्सचेंज और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जोटे कि हम अपन डिस्कशन करूथले तो हमें कार्बन को कैप्चर अपन करिया को ट्राई करू दैट्स कॉल्ड एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन राइट सो हमें डिटेल अपन पढि सेचे इन आवर एनवायरनमेंट इकोलॉजी क्लास अपन जाई कि भी देखि नेबे हमें टोटल अपन ये सब जिंस अपन कवर अप करछे लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन The main pollutants responsible for causing your greenhouse effect, acid rain, and your ozone layer depletions are. Thank you, Subhasri. So, Malati, Suchitra, and all. Samastamko, very good evening to all of you. Samas answer दियंतु. All of you please try to answer. The main pollutants responsible for causing your greenhouse effects, acid rain, and ozone layer depletions are. कौन हम आंसर समस्त आंसर दियंतु वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो मैंने भी देखुछन क्लास टिके लाइक अपन कर दियंतु जो मैंने भी क्लास अपन देखुछन टिके अपन लाइक अपन कर दियंतु सो द मेन पोल्यूटेंट्स रिस्पांसिबल फॉर योर ग्रीन हाउस इफेक्ट पे मेजर पोल्यूटेंट्स अपन कौन सर कार्बन डाइऑक्साइड राइट एसिड रेन पे कौन हमें पढ़ी छे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर राइट कि नहीं ता माने अपन SO2 अपन रहबो देन अपन ओजोन लेयर डिप्लेशन पे कौन हबो CFC अपन हबो ता माने D अपन करेक्ट आंसर हबो इज दिस थिंग क्लियर बुझी पाले समझते सो एठी आंसर अपन D अपन हबो जो मन को PDF अपन हेजी देखा जाउची इफ PDF इज नॉट क्लियर देन अपन राइट साइड अपन देखंतु वीडियो रे अपन तीनटा डॉट अपन अछि पूरा एक्सट्रीम कॉर्नर अपन देखंतु तीनटा डॉट अपन रहिछि ए तीनटा डॉट को अपन क्लिक करंतु देन अपन एठी क्वालिटी अपन आसीबो क्वालिटी सो क्वालिटी अपन 144 पिक्सेल अपन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट अपन हेछि ताको अपन 360 पिक्सेल अपन करंतु सब जिंस अपन क्लियर देखा जिवो ओके सो देखिनंतु मेजर ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड्स योर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन nitrous oxide and various synthetic chemicals so carbon dioxide is widely reported as the most important anthropogenic greenhouse gases
because it currently accounts for the greatest portion of the warming associated with the human activities. So the major anthropogenic human activities greenhouse gas which is carbon dioxide, that you should remember. Similarly, whenever we are talking about acid rain, so it is caused by the chemical reaction that begins when compounds like your sulfur dioxide, nitrogen oxide that are released into the air. So these substances can rise very high into the atmosphere, where they mix and react with your water, oxygen and other chemicals to form your more acidic pollutants, which is called as your acid rain. So when the rainwater pH will be below your 5.6, then that will be called as your acid rain. And oxides of nitrogen and sulfur are primarily responsible for your acid rain, so that you should remember. Then if we'll talk about your ozone layer depletion, it occurs when your chlorofluorocarbons, CFCs and your halogens, so which these are the gases formerly found in aerosol spray cans and refrigerants that are released in the atmosphere. तो सेमाने कौन होबो ना आपनकर ओजोन को जेतबे कोन डिसोसिएट आपन हुए डे टाइम रे, सो ये ओजोन को कंबाइन आपनकर हवा को दिए नाही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपनकर ओजोन को कंबाइन आपन हवा को दबो नाही, सो कोन होबो ना ओजोन डिप्लेट आपन हिजबो. सो प्राइमरली रिस्पांसिबल आपन होची CFCs. सो करेक्ट आंसर ताले आपन कोन होबो देन आपनकर D will be your correct answer. Is this clear? Chlorofluorocarbon is primarily responsible for ozone layer depletion. Sulfur dioxide is responsible for acid rain. Carbon dioxide is responsible for greenhouse effect, right? So D will be a correct answer. Let's go to next one. Which of the following can be used for controlling your gaseous air pollutants? Correct answer कौन होगा? Which of the following can be used for controlling your gaseous air pollutants? So primarily आपनकर मन रखिबे. So gaseous criteria pollutants as well as your volatile organic compounds or other gaseous air toxics are controlled by means of three basic techniques. So that are absorption, adsorption and incineration. Fine, जहाँ को अपना combustion अपन को हाउस जहाँ जो एक अपना निया लगा जाए. So adsorption, absorption and incineration, these are the three basic techniques through which your gaseous air pollutants are actually controlled. So C will be the more appropriate and your correct answers अपना. ठीक है जी. Let's go to your next question. Which of the following organisms fix nitrogen in an aquatic ecosystems? So which of the following organisms fix nitrogen in an aquatic ecosystem? So correct answer अपन कौन होगा? Correct answer अपन कौन होगा? That will be your cyanobacteria. So ये questions बारंबार अपन करो वैसे repeat अपन को चीज़ मन रखिए. Nitrogen fixation is mediated by variety of your autotrophic and your heterotrophic bacteria. Cyanobacteria appear responsible for most of planktonic fixation in aquatic ecosystems, and rates of fixation are high only when these organisms makes a major percentage of the planktonic biomass. So nitrogen fixation apnangara, so ye apnangara, this is primarily responsible due to your cyanobacteria, so that you have to remember. Okay, so which is primarily responsible for the fixation in an aquatic ecosystem? So apnanga मन रखिबे. ये questions repeat अपन खोजी cyanobacteria. Next अपन देखंतु रेड डाटा बुक, ये क्वेश्चंस भी अपन को रिपीट अपन कर रहा होची. सो अपन मन रखिबे रेड डाटा बुक इट कंटेन्स डाटा ऑफ. द करेक्ट आंसर अपन कोन होबा? दैट विल बी योर एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट? सो रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ योर endangered species. So red data book is basically a public document which is created for recording endangered and your rare species of your plants, animals, fungi as well as some local subspecies which are present in particular region. So primarily this is nothing but a document established for documenting rare and endangered species, that you should remember. And eighth रे अपन का threatened species अपन का आसे, right? So species of animals, plants and fungi, and red data books contains the list of your threatened species. अपन को options रे threatened species मध्य अपन देखियो को मिली पारे. Fine. So अपन को देखिबे options अपन कोन रही छि endangered species अपन रहिथिबो. else endangered species रे mainly अपन को threatened species को अपन को list out अपन करा छै. So threatened species मध्य options अपन देखियो को मिलिबो. So ये क्वेश्चन एसएससी रे पचरा हिछि, यूपीएससी रे पचरा हिछि, राइट? सब बेले अपन क्वेश्चंस रिपीट होछि, अपन मन रखिबे. प्राइमरली वर्तमान आमर जो IUCN अपन अछि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इट एक्चुअली मेंटेन्स योर रेड डाटा बुक, दैट यू शुड रिमेंबर. एंड हम ओएस रे अपन क्वेश्चन आसर छी IUCN रे हेडक्वार्टर अपन कोठी ए क्वेश्चंस रिपीट अपन होछि ओएस रे एवं एएस रे. फाइन. सो अपन को मन रखिबे IUCN रे हेडक्वार्टर देखंतु ये 71 रो क्वेश्चंस ये होछि अपन 70 नंबर क्वेश्चंस अपन दिला. रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ आंसर हेतन एंडेंजर्ड स्पीशीज. 71 नंबर अपन पचला जे IUCN रे हेडक्वार्टर अपन कोठी अछि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. सो यार हेडक्वार्टर कोठी अछि, दैट विल बी योर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड. क्लियर? IUCN रे हेडक्वार्टर अपन क्वेश्चंस एग्जाम अपन पचरितला. ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग. समस्त आंसर मते दोछंदी बहुत सुंदर. मालती, सुशांत, सुचित्रा. ओके, सो थैंक यू.
जो मैंने आपण करूछन जो मैंने वीडियो देखछन गोटे लाइक आपण करनियंतु सो दैट आम एमती आप सबू एग्जाम सीरीज एमती आम डिस्कसन आप करिपरिबा एनवायरमेंट इकोलॉजी 2011 2015 एंड आज आप 2016 पेपर आम डिस्कसन आप करने आगु को 2017 18 राइट 19 भी आम डिस्कसन करवा 2006 आप रही जाइए मुझे गोटे आप डिस्कसन करने ओके सो आयुष हेडक्वार्टर होकर दैट्स योर ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड दैट यू शुड रिमेंबर सो इट्स हेडक्वार्टर आर इन योर ग्लैंड Switzerland that you should remember. IUCN has observer and consultative status at your United Nations and plays a role in the implementation of your several international conventions on conservation and your biodiversity. Fine. Hello. Can you hear me? Am I audible? Hello, so can you hear me? Okay, fine, it's fine right now, right? So what is the animal symbol of WWF? What is the animal symbol of your WWF? Fine, ebe ठीक अछि तो it's fine, right? Okay, fine. So what is the animal symbol of your WWF? That's your World Wildlife Fund. World Wildlife Fund रा animal symbol अपन कोन? Correct answer अपन कोन हो? So that's your giant panda, right? So giant panda. So giant panda is the most powerful symbol in the world when it comes to species conservation. So giant panda will be your correct answer. Adored around the world, the distinctive black and white animal is a national treasure in China and has been the symbol of your WWF since its formation in 1961. So that you should remember. So giant panda will be your correct answer, which is considered as the symbol of your World Wildlife Fund. WWF ro fund WWF ro animal symbol hoche giant panda, so that you should remember. Next one, the occurrence of your pesticides like DDT in higher trophical levels in an ecosystem is termed as, correct answer अपन कोन हो कोंतु? Easy question, हमें ऑलरेडी डिस्कशन अपन करि सेचे. कोन हो correct answer? The occurrence of pesticides like DDT in higher trophic levels in an ecosystem is termed as, correct answer कौन हम? बायो रिमेडिएशन केमिति आपनकर बायो रिमेडिएशन माने आपनकर बुझी परछन तो रेमेडी इज एन एक्चुअली थेरापी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपनकर छडा जाय सो दैट आपनकर कोन हम ना सब आपनकर टॉक्सिक कंसंट्रेंट्स आपनकर रिमूव आपनकर करा जाय परिबो सो दैट इज एक्चुअली एन थेरापी बा ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट यू कैन रिमेंबर सो ए केमिति आपनकर हबो बी आपनकर हबो बायो मैग्निफिकेशन एवं आपनकर बायो मैग्निफिकेशन एवं बायो अकोमुलेशन आपण माने कंफ्यूज एवं हवा कथा बट एठी त आपण बायो अकोमुलेशन देइनी तो करेक्ट आंसर आपण बी डेफिनेटली बायो मैग्निफिकेशन से आपण करेक्ट आंसर आपण हबो बुझी पले सो कोन हला एनी इश्यू सुनील एनी इश्यूज जियान पंडा सिंबल ऑफ WWF एनी इश्यूज सुनील इंस्पिरेशन जोन एनी इश्यूज सो देखो तो दिसटा डिफरेंस आपण मन रखिबे गोटे हूँ बायो मैग्निफिकेशन आउ गोटे हूँ बायो अकोमुलेशन जदि आप कौन गोटे ऑर्गेनिजम्स रे कौन हो पॉइजन्स आप डिपोजिट आप गोटे ऑर्गेनिजम्स दैट विल बी कॉल्ड बायो अकोमुलेशन धीरे धीरे आप कौन हम ना जो आप छोट माछ को आप बड़ माछ आप खाइब सो जू प्लांक्टन्स आप जो आप कंज्यूमर जू प्लांक्टन्स कौन रोचे आप से फाइटो प्लांक्टन्स आप कंज्यूम कर जो कि पॉइजन्स किसी रहा जो पॉइजन्स गुड़िक आप इंडस्ट्रियल वेस्ट रू हो सो आप होम वेस्टेज हो व्हीकल पॉल्यूटेंट्स हो तो जो आप पॉल्यूटेंट फाइटोप्लैंक्टन पॉल्यूटेड हो सो जो जू प्लांक्टन्स इट विल ईट योर फाइटोप्लैंक्टन्स सो किसी टॉक्सिन्स आप डिपोजिट आप हम एगेन आप कौन हम ना आप जितेबाला ताकू गोटे प्रकार माछ आप खाइब पुणी गोटे बड़ माछ आप खाइब तो से कौन हो जिते गोटे ट्रॉफिक लेवल आउ गोटे ट्रॉफिक लेवल को कौन हो चेंजेस आप हो सो से कौन हम ना टॉक्सिन्स पॉइजन्स
ये हूँ यार क्वांटिटी आप धीरे 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 कौन हम ना बढ़ सो दिस इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन बायो आकोमुलेशन आप कौन ना गोटे ट्रॉफिक लेवल गोटे ऑर्गेनिजम्स जो टॉक्सिन्स आप बढ़ुची सो ये हूँ हेरिंग जू प्लांटन्स आप जो रहा सो ये सब जू प्लांटन्स को आप फीड आप कर तो ये आप केतेटा टॉक्सिन्स आप भावी ये हूँ 1 यूनिट ये हूँ 1 यूनिट ये हूँ 1 यूनिट तो ये गुड़िक जो खाइबा ताने आप या भितर 4 यूनिट्स टॉक्सिन्स अपन डिपोजिट अपन हैला सो दैट इज कॉल्ड एज बायो अक्युमुलेशन फाइन सो बायो अक्युमुलेशन कौन दिस इज द प्रोसेस ऑफ अक्युमुलेटिंग टॉक्सिक केमिकल्स सच एज pollutants pesticides and other toxins directly into the human body either through the air water food intake or directly through the skin is termed as bio accumulation so as this toxic compounds accumulates within the human body it increases the risk of a chronic poisoning and other severe health disorder so ये जो टॉक्सिक केमिकल्स कौन है ना जो अक्युमुलेट अपन हैला okay so within an organisms that will be called as bio accumulation but bio magnification अपन एटी क्वेश्चंस अपन रहितला सो आंसर अपन bio magnification अपन हेतंदा जहाँ को बायो एम्प्लीफिकेशन मध्यम कुआ जाए जहाँ को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मध्य अपन कुआ जाए दिस इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक सच एज पेस्टिसाइड्स इन द टिश्यूज ऑफ टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स at successively higher levels in a food chain जो हमको देखा जाए so biomagnification को मैं simply अपन कहि परिबा this is defined as the rise or increase in the contaminated substance caused by intoxicating environment जेमिति कि अपन heavy metals such as mercury arsenic pesticides वगैरह polychlorinated diphenyls DDT वगैरह तो अपन डिपोजिट अपन हुए so organisms level तो अपन कौन हुए ना धीरे धीरे poisons levels अपन बढ़े इन टॉपिक levels then that will be called as biomagnification बुझी परछंती comment लिखी देले मन रही so I do the most of these classes okay fine so no issues fine so these substances are taken up by the organisms through the food they consume when the organisms in the higher food chain feed on those organisms in the lower food chain containing these toxins get accumulated in the higher organisms the trophic level is the higher organisms रे toxins अपन deposit अपन हबो ताको हमें simply अपन को कोन कहू ना bio magnification अपन कहू is this thing clear बुझियला so B will be your correct answer let's go to next one Which of the following Indian states union territory has the maximum percentage of your mangrove cover? Mangrove cover maximum अपनकर कोठी अपनकर को स्टेट रे करेक्ट आंसर कोन हबो वेस्ट बेंगल अपनकर बांड हमें मैंग्रोव्स ऊपर हमें 2-3 वर्ष अपन खेलानी हमें सबोले गोटे क्वेश्चंस अपन डिस्कशन देखि आसु छे राइट तो अपनकर पचारथिला अपनकर सबटो लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर अपनकर कोठी देखिया को मिले तो करेक्ट आंसर अपन कोन हेतंदा ना सुंदरबन अपन हेतंदा राइट एक क्वेश्चन हमें अपनकर कवर अप करछे सो वेस्ट बेंगल हैज प्राइमरली 42.45% ऑफ योर इंडिया's mangrove cover and Sundarban mangroves forest it consists of it is the largest such forest in the world that you should remember which is located on your Ganges Brahmaputra and your Meghna river delta on your Bay of Bengal it is adjacent to the border of your India Sundarban World Heritage Site inscribed in your 1987 so that you can remember so Sundarban mangrove forest it is one of the largest such forest in the world that you can remember fine so West Bengal covers your 42.45% आगो हमको आपनकर कोठी आपनकर रहिछि मैंग्रोव फॉरेस्ट आपन हाईएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट पचारितला एबे आपनकर देखन 2016 रे क्वेश्चन आपनकर पचारला को स्टेट रे मैक्सिमम आपनकर मैंग्रोव कवर आपन रहिछि राइट ने सो लेट्स गो टू नेक्स्ट वन the highest per capita emitter of your carbon dioxide in the world is so correct answer from kon hobo highest per capita emitter of carbon dioxide in the world is bartman में current perspective current analysis current point of discussion अपन करिबा जदी so this will be your China so China is the world's largest contributing country to carbon dioxide emissions तो ऑफिशियल आंसर अपन एथरे सी अपन रहितला ये 2016 रो क्वेश्चन वर्तमान हमें अपन 2020 रो जदे में देखिबा so China is the world's largest contributor country to your carbon dioxide emissions a trend that has steadily risen over the years now producing your 10 billion metric tons of carbon dioxide so first China then US then अपन India so carbon dioxide emissions through in your kilotons ये गोटे रिपोर्ट अपन पब्लिश हेतला so China होछ अपन मैक्सिमम अपन carbon dioxide emissions अपन so that you can remember followed by US next होछ अपन lion-tailed macaw it is a key faunal species of your which biosphere reserve lion-tailed macaw is a key faunal species of your which biosphere reserve so correct answer अपन हबो that's your Nilgiri right so correct answer होछ अपन that's your Nilgiri so lion-tailed macaw so it is endemic to the western ghats in the southern India and it is endangered it is a habitat specialist restricted to the evergreen forest of the ghats okay so lion-tailed macaw एमती किछि स्पीशीज ऊपर क्वेश्चंस अपन को पचरा होछि okay नेक्स्ट अपन देखंतु who said कोटा अपन कोटेशन अपन पचराथला who said earth provides enough to satisfy every man's need but not your every man's greed so ये स्टेटमेंट अपन का कहारो ये स्टेटमेंट अपन का कहारो this is the statement of your Mahatma Gandhi right so this is the statement of your Mahatma Gandhi that you should remember
So earth provides enough to satisfy every man's need but not your every man's greed. So here actually comes the concept of your sustainable development, right? So sustainable development concept upon kono na to meet the need of the present generation with considering without affecting the need of your future generation, right? So this is the concept of your sustainable development. Mahatma Gandhi ko quotation upon hoitila je upon earth provide enough to satisfy every man's need but not your every man's greed. So upon exploitation upon kariba katha nuhi, right? So this is the statement of your Mahatma Gandhi. Fine. Next upon देखो what is the theme for your world environment day. तो ये जेतु 2016 रो क्वेश्चन से 2016 अपन पचार थिला जार करेक्ट आंसर अपन हेतंदा सी दैट्स योर go wild for life. This is actually the theme of your world environment day. एस रे यार क्वेश्चन अपन पचार थिला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे केबे अपन ऑब्जर्व अपन करा जाए केबे अपन ऑब्जर्व अपन हुए. सो दिस इज ऑब्जर्व ऑन योर 5th of June दैट यू नीड टू रिमेंबर. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे केबे ऑब्जर्व अपन करा जाए दैट्स योर 5th of June दैट यू नीड टू रिमेंबर. क्लियर. सो बर्तमान पाई हमर 2021 रो सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रो आपनकर थीम आपनकर रहिछि. सो दैट इज दैट थीम आपन कोन रहबा ना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. इकोसिस्टम रिस्टोरेशन विल बी द थीम. सो आपनकर प्रेजेंट एबे एग्जाम पे आपन मन रखिबे व्हिच फोकस ऑन रीसेटिंग आवर रिलेशन विथ योर नेचर. राइट. इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इज द थीम. सो दैट यू नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट होछ आपन देखंतु ऑलिव रिड्यू टोटल ऊपर दीटा स्टेटमेंट आपन रहिछि. सो आपनकर देखि नियंतु. These are considered to be endangered because of their few remaining nesting sites in the world. So they are peculiar behavior of synchronized nesting in mass numbers. It is called as aribada. Aribada is your phenomenon जो अपना mass nesting अपन करा जाए. Olive readily turtle जो अपना mass nesting अपन करंती. So this is called as your aribada. Fine. जो माने भी अपन वीडियो देखछन कोटे लाइक अपन करनियन तो. Gahirmatha beach in Odisha is one of their few nesting grounds in the world. So these are the two statements अपन दीटा जगह अपन statement अपन correct है, right? So both the statements are correct. So olive ridley turtles, these are the smallest and the most abundant of all the sea turtles found in the world, inhabiting warm waters of the Pacific, Atlantic and your Indian Oceans. So they are best known for their unique mass nesting called as your aribada, where thousands of their female come together on the same beach to lay eggs. ताको अपन mass nesting अपन कुआ जाए, जाको aribada phenomenon अपन कुआ जाए. एक क्वेश्चन अपन करा UPSC IAS रे अपन का आसी सारी चलिटी IAS रे अपन पचराई चलची. So the species is listed as vulnerable in your IUCN Red List, Appendix 1 Sites and Schedule 1 in your Wildlife Protection Act 1972. Fine. Next अपन देखो last question. ITEWC Indian Tsunami Early Warning Center, established at your Indian National Center for Ocean Information Science, is located at correct answer अपन कौन होगा that will be Hyderabad. Okay. So Indian Tsunami Early Warning Center was established at Indian National Center for Ocean Information Services, Hyderabad, which is an autonomous body under Ministry of Earth Science, that you should remember, which continues to provide timely tsunami advisories to your stakeholders. So this is an institute which is established under your Ministry of Earth Science, and ये अपन कोड हेची पचरथला correct answer अपन कोन होबा that will be Hyderabad. So D will be a correct answer. Fine. So ये थिला आजिर आपनकर किछिटा सब तक आम डिस्कसन जहाँ भी अपन कले ये हूँ 2016 रो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अपन क्वेश्चंस. ओके. सो ये सब तक अपन जो मैंने सब लेट अपन आसन सो टिके अपन देखि नियंतु. सो काफी अपन हेल्पफुल अपन हबो. आम एमती सब ईयर आम अपन एमती एनालिसिस आम अपन करूछु. एबे वर्तमान एनवायरनमेंट इकोलॉजी अपन चली तापर अपन धीरे धीरे आम सब सब्जेक्ट अपन एमती एनालिसिस अपन करिवा. फाइन. सो ये अपन 2016 रो एनवायरनमेंट इकोलॉजी जो मैंने अनअकैडमी अपन जॉइन करना दोज हु आर इंटरेस्टेड. सो अनअकैडमी एमती डेडिकेटेडली सब क्लास अपन होइछि ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी एनवायरनमेंट कल्चर. सो अपन मैंने दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड यू कैन जॉइन अनअकैडमी. सो अनअकैडमी जब अपन जॉइन करछंती मंथली सब्सक्रिप्शन अपन नहीं परिबे या गोटे 1 ईयर नेले अपन 500 रुपीज अपन आसीबो. 2 ईयर नेले अपन 300 रुपीज अपन आसीबो. फाइन. सो 1 ईयर कि 2 ईयर सब्सक्रिप्शन अपन नहीं परिबे बाय अप्लाइंग माय रेफरल कोड दैट्स पुरुषोत्तम लाइव PURUSOTTM LIV पुरुषोत्तम लाइव. तो अपन पूरा टोटल अपन सब एक्सेस अपन मिल जिवो. तो अपन जहाँ भी इच्छा अपन टोटल सब कोर्स को अपन देखिपारे. सो जो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अपन नेबे अपन एमती सब एजुकेटर सब कोर्स को अपन एक्सेस अपन मिल जिवो. आपनकर सब इंडिविजुअल कोर्स को अपन एक्सेस अपन करि परिबे व्हिच इज हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस पाइन जतक जक अपन सिलेबस अपन रही से सब को टोटल मु अपन गोटे छोट छोट मॉड्यूल अपन सारी. तो ये अपन काफी अपन देखिए अपन हेल्पफुल अपन हम. फाइन. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. विश यू ऑल द बेस्ट. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. जो मैंने वीडियो देखते गोटे लाइक अपन करनियंतु एंड समस्त अपन गुड नाइट. अगेन वी आर गोइंग टू मीट ऑन योर टुमारोज क्लास 7 PM. खाली अपन 7 क्लास अच्छी. टिल देन थैंक यू. गुड बाय.